चल अब मैं तुम लोग का बड़ा यहाँ पे नॉलेज चेक करूंगा कि सपोज बड़ा if the four coins if they are been tossed बड़ा four coins तो बताओ with respect to बड़ा four coins there will be how many outcomes? Very good Parth. Tejas Zuvaje. Correct. There will be बड़ा 16 outcomes. चल बड़ा with respect to 5 coins बड़ा बताओ there will be how many outcomes? Very good. With respect to बड़ा 6 coins. Seven coins. 8 coins. 9 coins. 10 coins. तो here in this case तुम लोग ने बराबर है with respect to 10 coins तुम लोग ने मुझे आंसर दे दिया बड़ा कि it is 1024 outcomes बराबर है नहीं दूंगा सभी को कितना भी जीत कर कितना भी रो नहीं दूंगा तो चलो मुझे बताओ कि with respect to 10 with respect to 10 coins चलो तुम लोग मुझे बताओ क्या उसका तुम लोग बड़ा मुझे सैंपल स्पेस बता सकते हो चलो कौन है बड़ा मुझे 10 पॉइंट्स का सैंपल स्पेस बता सकता है Who is a mathematician bada of A1 Commerce Academy? नो भाई मैं नहीं अरे तेजल ये तू क्या बोल रही है मुझे सैंपल स्पेस चाहिए फॉर 10 कॉइन्स का बड़ा 1024 आउटकम्स तुम लोग लिख सकते हो प्रैक्टिकली बड़ा किसी के लिए भी पॉसिबल है ये चल छोड़ 9 कॉइन्स 512 आउटकम्स का लिख सकते हो 8 कॉइन्स 256 आउटकम्स का लिख सकते हो चल 6 कॉइन्स 64 आउटकम्स का लिख सकते हो 64 No, brother. Practically, it is not possible, bro. Because in order to write the outcomes, bro, for 6 coins, 7 coins, 5 coins,
है कि नहीं? बट इट विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इतना सारा बड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना किसी के लिए भी बड़ा पॉसिबल नहीं है. तो हियर बड़ा देयर कम्स अ लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. The probability can solve only the sums which are based upon one coin, two coins, three coins. But if the sum is based upon 6 coins, 7 coins, तो इसका आंसर बड़ा खुद प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दे सकता है. ये जो मैं तुम लोग को ट्रिक्स बता रहा हूँ बेटा, कहीं पे नोट कर लेना. और ये जो सारे आंसर्स जो तुम लोग ने मुझे दिए ना मैडम, कि फॉर 4 coins there will be 16 outcomes, for 7 it will be 128 outcomes. But all these answers, it has been obtained, madam, by using the formula of 2 raised to n, madam. By using the formula of 2 raised to n. Where n represents the number of coins which have been tossed. Next, with respect to a die, when a die is rolled, that means it is a single die. It will show a total 6 outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and n of s will be equal to 6. When 2 dice are rolled, it will show 36 outcomes, starting from 1, 1, 1, 2, till it will continue for 6, 4, 6, 5, 6, 6. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो, नोट कर लिया सब लोग ने?
चलो अब मुझे ये बताओ बड़ा कि विद रिस्पेक्ट टू थ्री डाइस बड़ा मुझे बताओ there will be total how many outcomes? Two and six, and with respect to four, four dice, there will be correct 1 2 9 6 outcomes. बट किसी के लिए भी बोला इतने सारे आउटकम्स लिखना बोलो पॉसिबल होगा और करेक्ट तो वंस अगेन बड़ा द चैप्टर probability it faces several limitations. It can solve the problem only with respect to one die or maximum with respect to two dice. If the sum is based upon three dice, four dice, five dice, तो इसका प्रॉब्लम जो है बड़ा प्रॉबिलिटी खुद सॉल्व नहीं कर सकता है. चलो तो हियर वी कंप्लीट बड़ा द टू important terms. चलो बड़ा next there comes बड़ा event. Next come बड़ा there comes event. Event. चलो now when we are going to study about the term event, so in that case each and every student they should know okay, what is event is. What is event is. So what event is a set. Event is a set of getting a favorable outcomes. It is not a universal set. Event is a set of getting favorable outcomes. What is the meaning of the word favorable? Favorable means the outcome which we desire, the outcome in which we are interested in. It is called to be as a favorable outcome. It is called to be as a favorable outcome. And events they are always denoted by using the letters like A, B, C. कोई भी लेटर बड़ा यूज करो कोई भी का मतलब कोई भी होगा but it should be capital. It should be capital. So here the example is being taken when a die is rolled. When a die is rolled, तो तुम लोग को तो सबको पता ही है कि sample space is always going to be 1 2 3 4 5 6. N of s it will be equal to 6. So in that case, अब मुझे ये बताओ, let A be the event of getting, let A be the event of getting even number. Here you go. So you will get the hint diagram. A is the event in which you will get the favorable outcomes like 2, 4,
6 सारे आउटकम्स नहीं मिले such that n of a will be equal to 3. Let b be the event of getting odd numbers. तो बड़ा b के फेवरेबल आउटकम्स कौन होंगे? Correct. 1, 3, 5. Such that n of b it will be equal to 3. अब मुझे ये बताओ, let c be the event of getting a number which is greater than 4. तो उसके बड़ा फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो गया बताओ? 5, 6. Such that n of c will be equal to n of c it will be equal to correct. Very good. तो इवेंट्स क्या है सब लोग को समझ आ? थ्री टर्म्स बड़ा भी है कंप्लीटेड. रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड थर्ड वन वाज अ इवेंट. चलो विल स्टॉप हियर बड़ा. आज के लिए आज मैं तुम लोग को थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर बड़ा विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ओके, ये रही ना बड़ा, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे. तो सब ऊपर से चला जाएगा. मेरे पास कौन सा लेक्चर है तुम लोग का? ओके चलो ठीक है. हाँ तुम लोग आज चलो रेस्ट करो थोड़ा सा. विल स्टॉप हियर. ओके बड़ा, चलो बाय ऑल ऑफ यू. I got the ulcer, but actually moving. Therefore, I am not able to speak fluently. मैं बोल नहीं पा रहा हूँ.